Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your hostess Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar Shukla. नमस्कार, आप सभी का मार्केट मंथ में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। लालिमा, हेडलाइंस। Sure, thank you, Nikhil. Yes, the headlines. BSE Sensex slumps nearly 800 points. NSE Nifty falls below 19,900. Rupee hovering near a record low, closed 20 paise lower at 83 rupees and 7 paise against the US dollar. And oil prices fell by approximately $1 ahead of the US Federal Reserve's interest rate decision. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स करीब 800 अंक नीचे आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,900 अंक के आसपास बंद हुआ। रुपया 20 पैसे लुढ़क कर 83 रुपए 7 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों के निर्णय के कारण कच्चे तेल की कीमत में करीब $1 की गिरावट। स्वागत है आप सभी का और हमारे साथ आज चर्चा के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, गुड इवनिंग। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शेयर बाजार के साथ में। तो भारत के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में करीब 800 अंकों का नुकसान हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बमुश्किल 19,900 अंक के स्तर पर रुक सका। वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त हुए मिले जुले संकेतों, रुपए की कमजोरी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेशकों द्वारा पैसा निकाले जाने के जैसे कारणों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1.18% यानी कि 796 अंक लुढ़क कर 66,800 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.15% यानी कि 231 अंकों की सुस्ती दर्ज करता हुआ 19,901 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में आज बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.3% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की नरमी आई। The key domestic share indices were ending lower for the second consecutive session at the BSE Sensex as the BSE Sensex slumps nearly 800 points and the NSE Nifty defends 19,900. Factors such as increasing US bond yields, rupee weakness, a surge in crude oil prices and selling by FIIs were weighing on the Dalal Street. Today's fall eroded investors' wealth by 2.25 lakh crore rupees as the market capitalization of BSE listed companies slipped to 320.75 lakh crore rupees from 323 lakh crore rupees in the previous session. At close, Sensex was down 796 points or 1.18% at 66,800 and Nifty was down 231 points or 1.15% at 19,901. In the broader market on the BSE mid-cap index shed 0.3% and the small-cap index fell 0.5%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 7 companies appreciated while the rest 23 declined. Power Grid gained 2.3%, Asian Paints rose 0.6% and Sun Pharma advanced 0.4%. On the other hand, HDFC Bank declined 4%, JSW Steel slumped 2.6% and Reliance fell 2.2%. In sectoral indices at the BSE, only 2 sectors gained, while 18 logged losses. Utilities sector was the top gainer as it surged 0.4%, followed by power, which added 0.3%. On the other side, commodities and financial services declined 1.39%, metal sector falls 1.25%, and realty sector lost 1.20%.
The overall market breadth was negative as shares of 1,549 companies appreciated and 2,112 companies declined. A total of 142 shares remained unchanged. I'm sure, Avinash, you would have guessed our first question. What has led to this fall? Just about a day ago, we had a continuous rallying of, for 11 days, continuous rallying, and now we see this sudden fall. Sensex down 796 points, closing at 66,800. What must go up must come down, but how do you describe the Sensex? See, I think basically the markets have turned very volatile, and I think clearly the single most factor which has been responsible for this selling has been the FI outflows. In fact, even today the market saw a very significant outflow by the FIs, and with the rupee turning weak and the dollar appreciating, I think of course all attention of the FIs has been on the currency factor. Plus today, I believe the FOMC minutes are going to come in. And in all probability, what the Fed, decides in terms of the interest rate hike or a pause, plus the kind of commentary, I think markets are discounting that the commentary may not be very good. There could be a very strong kind of signal that inflation has not come down up till now to desired levels. That could mean that there could be some more interest rate hikes, coming ahead. So my sense is, I think, the FOMC meeting as well as the FI selling combined had a significant kind of outflow on almost every sector today. We saw significant selling, in the Sensex, in the Nifty. And I think this selling was broad-based right from morning. So it was not that, the session was weak, after the second half. The session was weak in the morning and there was hardly any kind of follow-up buying in the second half. Even the domestic institutions tried their best, but I think liquidity outflow by the FIs has been quite significant. So I think these were the main reasons why the market sentiment has changed, and any kind of adverse development on the FOMC side could definitely make matters worse. So I think we'll have to wait and watch for today's comments which come from the FOMC committee. अविनाश, 11 दिनों की जो एक जीत हो रही थी लोगों की, उसका हम कह सकते हैं सिलसिला टूट गया और घरेलू बाजारों ने भी अपनी गति को एक तरह से छोड़ ही दिया। हालांकि उम्मीद कुछ और की गई थी, लेकिन एक अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत ही ज़रूरी सा लोगों को लग रहा था कि एक ऐसा ब्रेक आना चाहिए जिससे मार्केट को फिर से रिकैप्चर किया जा सके। सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से पैसा मार्केट में लोग लगा रहे थे, स्पेसिफिकली अगर हम प्राइमरी मार्केट की भी बात करें तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम देख रहे थे कि 3 या 4 दिन कोई आईपीओ आ रहे थे, पैसा लग रहा था। तो मेरे ख्याल से ये जो तेजी का माहौल था जो अप्रैल से शुरू हो गया, इसमें कहीं ना कहीं तो मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आना बाकी था। अभी करेक्शन किस कारण से हुआ वो कहना मुश्किल है, लेकिन एफआईएस भी पिछले 10, 12, 15 दिनों से लगातार इंडियन मार्केट्स में वीकवाली कर रहे हैं, रुपया भी वीक हो रहा है। उसके बाद हमने देखा है कि अभी ये एफओएमसी की जो मीटिंग है वहां पे उम्मीद लगा रही थी कि इन्फ्लेशन जब तक कम नहीं हो सकता है कि आने वाले साल में जितने भी अभी क्वार्टर्स बचे हैं एफओएमसी के, वहां पे हो सकता है कि थोड़ी और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बातें हो। हालांकि कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और यही कारण है कि बाजार में 20,000 का लेवल जब हुआ निफ्टी का, सारे लोगों को लगा कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से मार्केट थका हुआ है और उसी लिए शायद ये एक करेक्शन है। पैनिक सेल ऑफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, करेक्शन जरूर काफी देखने को। When the markets had crossed 67,000, Avinash, people were wondering if we should invest or sell. Now that it's come down, what is your opinion? If somebody has to invest, is this the right time, or or he or she must wait and watch? No, I think it is better to wait and watch. There is no need to hurry. Today the FOMC meeting is going to be, minutes are going to be announced. I think once we get a full assessment of what the commentary of the Fed governor is, I think maybe in the next 1 to 2 days this volatility in the market on the downside would continue. And therefore, I think any bounce, has to be taken with a little bit of caution. So I would suggest, it's better to wait till the dust settles down. And maybe in the coming 8 to 10 days, I think if hopefully, the mood changes in the market, the flows in the domestic market improve, then only I think, small investors should think of building positions here. Till then, they can just sit and hold. अविनाश, 2 बातें जोड़ना चाहूँगा। एक हम बात करेंगे पीएसयू बैंकिंग की, और दूसरी मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि जो लगातार आपने नई आईपीओ की भी बात की थी, तो नए आईपीओ हम देख रहे हैं कि निवेशक अपना पैसा लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे हैं। जो भी नया आईपीओ आ रहा है दिल खोल करके उसमें पैसा लगा रहे हैं, और आज ही हमने देखा भी है कि किस तरह से उस आईपीओ ने लोगों को एक लाभ की स्थिति में ला करके रख दिया। इसको पीएसयू बैंकिंग से थोड़ा सा अगर जोड़कर आप क्लियर करें तो कैसा रहेगा? देखिए, पीएसयू बैंक्स में हमने पिछले 1-2 हफ्ते से अच्छी तेजी और बाउंस बैक देखा। इसका मेन कारण ये था कि
जिस प्रकार से क्रेडिट सिस्टम में हो रहा है, इन कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ही सस्ती थी। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, जैसे कि एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इंडसइंड हो गया, तो उस मुकाबले में अगर हम बड़े पीएसयू बैंक्स की बात करें, जैसे एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कैचअप हो चुका है। और उम्मीद है कि सेकंड क्वार्टर, जो सितंबर का क्वार्टर आएगा, वो भी काफी स्ट्रांग होने की उम्मीद है। देखिए 10-12% ग्रोथ होता है तो ऑलरेडी रिटेल डिमांड अच्छी है, कॉर्पोरेट कैपेक्स अच्छी है, ये सारे सरकारी बैंकों ने अपने पुराने जो खराब एसेट्स थे उनको पूरी तरह से प्रोवाइड करके वाइप ऑफ किया है। तो ये जो नया उछाल आपको देखने को मिला है वो आगे भी कंटिन्यू होगा। बट मेरे ख्याल से अभी फिलहाल जिस प्रकार से तेजी पीएसयू बैंक से भी हमने देखी है, वहां पे हो सकता है कि कोई थोड़ा सा ठहराव देखने को मिले, क्योंकि बहुत छोटे समय में ये पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा कॉशियस, यहाँ पे भी कॉशन रखने का समय है, क्योंकि ऊपरी लेवल पे अगर कोई इन्वेस्टर इसमें निवेश करता है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत इनको तकलीफ होगी, क्योंकि बाजार में क्या है कि एक बार बढ़ने के बाद शेयर वहीं पे रुकेंगे, थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे और अगले रिजल्ट्स का या कोई कमेंट्री, बिजनेस कमेंट्री सुनने के बाद ही वहां पे ग्रेजुअल री-रेटिंग होगी। Avinash, we also see, if we look at the larger picture, that over the last few months, the small cap and the mid cap have been doing very well. Is it a sign of greater investor confidence? And do you think that this is also a sign of the fact that a lot of middle class is now investing in the stock markets, moving probably a little bit away from reality and gold? No, mid caps have always been, in terms of volatility, in terms of risk reward, have always been better than the large caps. But you must understand that for any rally to sustain, you need the participation of the large cap companies. We see, companies like HDFC Bank, companies like Larsen and Toubro, or for that reason Bajaj Auto. These are large companies which have not done that well. So clearly the small cap and mid cap have done well selectively. Even today there are some good companies available, but I think broadly the the movement in small cap and mid cap was very, very significant, and the very short acquisition. We really be cautious now, because if the correction comes, the first impact would be felt on the smaller cap companies, because liquidity here is very tightly controlled and volatility is going to be very high. See, whenever a sell-off happens, the thing will be more significant and more negative for people who hold only small and mid cap shares, because volatility can actually take away their profits and convert them into losses in no time. So I think you need to be careful. Yes, longer term gains can come in, but in the very near term, in the current scenario, I think small cap, mid caps are a place I think you need to be very cautious. Only selective companies you need to invest. I think broadly non-exposure in the large cap can actually be a little more negative for the investors, because large caps have not participated at all as compared to the small and mid caps. Yeah. अविनाश, कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती भी देखने को हमें मिल रही है, और ऊर्जा और ऑटो सेक्टर दो ऐसे सेक्टर जो इनसे पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिलहाल आने वाले समय के लिए? देखिए, ऑटो सेक्टर में एक बात तो मैं यही कहूंगा कि डिमांड, कोर डिमांड है। आप अगर पैसेंजर कार की बात करें, टू व्हीलर की बात करें, कमर्शियल व्हीकल की बात करें, तो डिमांड ऑन ग्राउंड अभी भी बहुत मजबूत है। और हालांकि देखिए क्रूड की कीमतें बढ़ती है तो इनके सेक्टर के ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन अभी जो क्रूड का भाव सॉफ्ट हो रहा है, अगर ये कंटिन्यूसली सॉफ्ट होता है तो इसका काफी फायदा ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलेगा। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो रिप्लेसमेंट डिमांड आती है व्हीकल्स के लिए, वहां पे आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। जो एंसिलरी प्लेयर्स है जो ऑटो को सप्लाई करते हैं, उनके लिए भी अच्छे वॉल्यूम का बेनिफिट उनको मिलेगा। तो मोटा मोटी आई थिंक पॉजिटिव है, लेकिन ये क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो कितने दिन नेगेटिव चलेगा वो देखना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबली अभी भी सप्लाई टाइट है क्रूड का, और अनुमान है कि अगर $90-95 तक ये क्रूड जाता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसमें एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, चीन में मांग एक बार फिर से बढ़ रही है, कच्चे तेल की लगातार वो मांग अपनी बढ़ा रहे हैं, तो ये किस तरह का साइन हो सकता है? देखिए, मांग अगर बढ़ गई तो आपको एक बात समझना है कि सप्लाई जो सऊदी से है, ओपेक कंट्रीज है, वो अभी लगातार कट रहा है, और डिमांड अगर बढ़ती है तो उसका मतलब क्रूड का प्राइस फिर ऊपरी लेवल पे वापस छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर वैसा होता है तो सारे जो पेट्रोकेमिकल इनपुट्स है, डीजल है, पेट्रोल है, उसके बाद जो भी इनपुट्स क्रूड से डिराइव्ड है, उनका डेफिनेटली इन कंपनीज को मार्जिन प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए तो क्रूड तो बेसिक रॉ मटेरियल है, तो
लग तो रहा है कि अगर ये चाइना का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्रूड का जो स्पोराडिक मूवमेंट है वो ऊपरी लेवल तक और जाने की उम्मीद रहेगी, जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए अभी भी खराब है, क्योंकि हम अभी भी नेट इंपोर्टर है क्रूड के। जी। And do you think the fact that we are still battling inflation, which is well above 6%, is that also playing a bit of a spoil sport in the markets? See, I think it is definitely playing a spoil sport, and I think most importantly, I think food inflation is going to be a very crucial element. I think only once we get to hear the latest, RBI governor commentary and the kind of viewpoints, following the, the latest RBI policy, we will get an idea. But yes, inflation is definitely elevated. It has impacted sectors like consumables. It has impacted sectors like FMCG, and I think only post September we will get to know whether the good monsoon is actually trickling down to better rural demand and some sort of easing on the inflation side. अविनाश, भारतीय शेयर बाजारों में हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं और हैवी वेट जो शेयर्स हैं उनकी बिकवाली देख रहे हैं। कई ऐसे कारण रहे हैं, खासतौर पे वैश्विक स्तर पर रहे हैं, जिनके कारण ऐसा हम देख रहे हैं। बाजार में फिसलन भी एक तरह से नजर आ रही है। तो जो हमारे घरेलू निवेशक हैं उन्हें किस तरह का मूड रखना चाहिए? क्या उन्हें निराश होने की जरूरत है या फिर वो लगातार अपनी उम्मीदों को बनाए रख सकते हैं कि हमारे लिए तो ये बेहतर है? देखिए, लंबी अवधि के लिए अगर किसी को शेयर में अभी भी इन्वेस्ट करना है, अगर अगले 1.5-2 साल के बाजार के अगले 6-8 महीने जो रहेंगे ना, वो बहुत वोलेटाइल रहेंगे, क्योंकि अगले 6 महीने में इलेक्शंस आने वाले हैं, स्टेट इलेक्शंस है, फिर जनरल इलेक्शंस है, और मार्केट ऑलरेडी ऊपरी लेवल से एक लेवल पहुंच चुका है। तो अभी जिनको निवेश करना है, अच्छी खासी कंपनीज अवेलेबल है, अच्छे वैल्यूएशंस भी अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट करेक्ट हो चुका है। लेकिन अवधि जो होगी वो कम से कम 2-3 साल के नजरिए से वो अगर निवेश करना चाहे तो ही अच्छा मौका है। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट डेफिनेटली वोलेटाइल रहेगा। जी। All right, now let's take a look at the Asian markets. Yes, Nikhil? जी हाँ, एशियन बाजार पे नजर डालते हैं तो एशियन बाजार में हालात कुछ इस तरह से आज रहे हैं। एशियाई शेयर बाजारों में हमें मिला जुला रुख आज देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.7% गिरावट के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग 0.6% लुढ़क गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5% नीचे आ गया। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज करीब करीब सपाट कारोबार के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजार में आज सकारात्मक रुख देखा गया। फ्रांस की कैक में 0.5% की बढ़त हुई। जर्मनी का डेक्स 0.7% ऊपर आ गया और लंदन का FTSE 100 0.8% उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे। अविनाश, विदेशी मुद्रा कारोबारियों का ये कहना है कि घरेलू शेयर बाजार में लगातार नकारात्मक रुख आने की संभावना है। निवेशक क्या इस धारणा से प्रभावित हो सकते हैं और एशियाई बाजार जो हैं उनका रुख हमें किस तरह का देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो FII वो इंडियन करेंसी को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर रुपया और वीक होता है, जो पॉसिबिलिटीज है, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट लगातार मुझे लग रहा है कि अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता, क्रूड ऊपर जाता है, तो भी उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन रुपी पे आएगा। तो मेरे ख्याल से नियर टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। FIIs अभी भी इंडिया में निवेशित है, पैसा आएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। FII की बाइंग की वजह नहीं, बट एक्चुअली सेलिंग से ज्यादा मार्केट प्रभावित। बट लॉन्गर टर्म में पैसा वापस आएगा और होपफुली मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स में आपको ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यही एक स्पेस है जहां पे FIIs पहले निवेश करते हैं। And how do you view we just read about China's Shanghai Composite Index having slipped 0.5%. How do you view China's economy vis-a-vis the rest of the Asian economy? Because real figures never come out, so one has to keep guessing. What is your take on that? No, I think, see, whether we agree or not, China has got a very significant weightage on the commodity market, specifically the metal market. And I think, you have to take a sector-specific view when you consider China. I would believe that, the metal market is going to see a lot of volatility and unless China re-enters the metal market in a big way. We are seeing a lot of, pain points on the metal side, both on the ferrous as well as on the non-ferrous side. So I think clearly, sectors which are dependent on raw materials from China and where, China has a very important role like pharma, metals. I think these are sectors which I think are going to underperform. Broadly, I think the entire markets, especially if you talk about India, is unlikely to be impacted significantly. But yes, some specific sectors like pharma and, metals are probably pain points which will probably see underperformance for the next 3 to 6 months. That's because much of our raw material comes from China, right? Yeah, I think for the pharma sector, a large part of the API still comes from China. And metals, as you agree, I mean, it's a market which is, the pricing is decided by China. China buying has been absent for
for a very long time in the global metal market. All right, let's go ahead and have a look at the US markets now. Wall Street closed almost flat yesterday as market participants looked ahead to the US Federal Reserve's expected decision to leave key interest rates unchanged tomorrow. All three major US stock indices ended in a volatile session with nominal gains as investors remained concerned ahead of the Fed's two-day monetary policy meeting. The central bank has vowed to remain agile with respect to economic data, which has shown signs that core inflation remains on its meandering descent back toward the Fed's annual 2% target and suggests the US economy remains on firm footing. The Nasdaq Composite Index and the S&P 500 both added marginally by 0.1%, while the Dow Jones Industrial ended almost flat. What's your take on the US markets? Because for a long time we were seeing that, is it in recession? Technically, yes, but not yet. Right now, but employment has been better now in the U.S. markets. How do you view the U.S. markets in the present scenario? No, I think the U.S. markets are going to be very volatile because clearly now the main focus point in the very near term will be the FOMC kind of minutes. And what is the view of FOMC on the U.S. economy? Our sense is that the U.S. economy is gaining traction, but at the same time inflation is not coming down. Yes. The Fed has clearly said that the comfort level for Fed on inflation is 2%, and it is currently little over 4%. So I think, unless and until interest rates don't come down, it's going to be a little challenging matter. And I think we have been seeing a lot of selling even on the technology side, especially on NASDAQ and, fintech related counters. So I would say that, it's going to be a roller coaster ride, at least for the next 1 to 2 quarters. And I think markets should also look at the September quarter results, which would be now due in the coming, 2 to 3 weeks. So I think all said and done, US markets are unlikely to remain on an upward kind of trajectory. They will remain volatile. अविनाश, अभी आपने मार्केट की बात की है और हम ये भी देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जो प्रमुख सेंट्रल बैंक्स हैं वो हमेशा इस इंतजार में रहता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका के प्रमुख जो केंद्रीय बैंक हैं वो किस तरह का स्पष्टीकरण देते हैं हर एक चीज के बारे में, उनकी अपनी स्थिति कैसी है, उनका अपना निवेश आगे का कैसा होने वाला, ये सारी चीजें होती हैं। भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए आप क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, बैंकिंग सेक्टर इंडिया में मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रांग है, सेफ है और अच्छी तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल दिखाता है। क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे बड़ी बात क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने पुश दिया है उसका फायदा अभी हमको दिख रहा है। कॉर्पोरेट कैपेक्स कारी कंपनीज कर रही है, एक्सपांशन कर रही है, प्लस रिटेल डिमांड बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बैड लोन्स और जो खराब लोन्स का सिलसिला 3-4 साल पहले था वो अभी बिल्कुल हट गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। इकोनॉमी अगर 6.5-7% से ग्रो करती है तो डेफिनेट पहला इम्पैक्ट तो आपको बैंकिंग सेक्टर पे ही देखने को मिलेगा। तो बैंक्स पे हम काफी पॉजिटिव है अगर नजरिया आपका कम से कम 1-2 साल का है। अच्छा, एक चीज अविनाश और मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है लगातार उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक सधा हुआ हाल है, हमारी सदी हुई स्थिति हमारी बनी हुई है और मॉनसून ने भी बहुत ही बेहतर, हम अगर कहें तो बेहतर ही परफॉर्म किया है। तो ऐसे में डेवलपमेंटल स्टेज पर अगर हम आते हैं और एफएमसीजी से रिलेटेड जो शेयर्स हैं इसमें, तो उनको किस तरह से आंका जा सकता है, उनका फ्यूचर आने वाले समय में हम किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिलेगा। क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में एक बात क्लियर है कि जब महंगाई बढ़ती है तभी डिमांड भी कम होती है। तो अभी भी जिस प्रकार का ग्राउंड रियलिटी है, रूरल डिमांड अभी भी थोड़ी दबी हुई है। अंदाजा है कि इस बारिश के बाद होपफुली सेक्टर ऑफ एफएमसीजी सेक्टर के लिए काफी अच्छे रहेगा। और यहाँ पे काफी अच्छे विकल्प है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश करना है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा निवेश जरूर करें, बट अवधि काफी लंबी रखें। क्योंकि जो सितंबर के बाद का जो मानसून का डेटा आएगा और उसके बाद जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पे अगर कोई कटौती होती है इन्फ्लेशन में तो आप देखोगे कि एफएमसीजी और सारे कंजम्पशन स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। अविनाश, जो लोग आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि आईपीओ एक बहुत ही सिलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। अच्छी कंपनी है तो हम मानते हैं कि यहाँ पे पैसा अच्छा बन सकता है, लेकिन ज्यादातर सारे जो आईपीओ आ रहे हैं बाजार में अभी वो बहुत ही हेवीली और एग्रेसिवली प्राइस्ड होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। और अगर आपको पैसा लगाना ही है तो इनको एक बार लिस्ट होने दीजिए, आराम से अपने टाइम के हिसाब से निवेश करिए। क्योंकि आईपीओ में हमने देखा है कि अभी ज्यादातर जो आईपीओ वो सब्सक्राइब होते हैं वहां पे एक तो अलॉटमेंट मिलता नहीं छोटे निवेशकों को, और दूसरा जो है कि वैल्यूएशन महंगे होने के
में रिस्क रिवॉर्ड टेबल पे ज्यादा कुछ बचता नहीं है। तो हमारा कहना है कि लिस्टिंग के बाद ही आप खरीद लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद ही आपका पैसा अच्छा बनेगा। चलिए अब रुपए पे हम नजर डाल देते हैं। तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 20 पैसे की गिरावट के साथ 83 रुपए 7 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीति के निर्णय और कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए ये गिरावट दर्ज हुई है। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 105.12 पर कारोबार कर रहा था। अविनाश, रुपए के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, रुपया जैसे मैंने पहले ही कहा कि काफी वीक ट्रेंड दिख रहा है, वोलेटाइल है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले कम से कम 1 या 2 महीने के लिए जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते नहीं है तब तक हो सकता है कि रुपया डॉलर के हिसाब से वीक रहे। तो मोटा मोटी मुझे यही लग रहा है कि रुपया अगर वीक रहता है तो उसका मतलब डॉलर एप्रिशिएट होगा, और जो कंपनियां बेसिकली इंपोर्ट करती है इनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। हालांकि एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स भी है, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट है, आईटी है, बट ज्यादा से ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करती है, और स्पेसिफिकली क्रूड रिलेटेड जो कंपनीज है इनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है अगर रुपया और वीक होता है। Avinash, one term which is often being used these days is de-dollarization, and we know that we are now dealing with about 18 countries approximately in rupees. I don't know if rupee, we can say that rupee has a reserve value or not. Dollar, of course, still has. Where do you see the rupee going from here? Are we moving in the direction of, can it at any point of time replace dollar, or are we still far from it? No, I think we are quite far away, because see, today also a massive part of the global trade is dominated by the dollar currency, and it may take a long time. It is not going to happen in the very near term. It is a good step by the government of India, but I think as all things stand, I think the process of rupee gaining more popularity with other countries is going to be a long way off. So I think in the near term things are not going to change. It may take at least next 3 to 5 years before we see material results here. All right, let's take a look at another story. Well, the government has said that nearly 20 lakh new workers were enrolled under the Employees State Insurance, that's ESI scheme, in July this year, and benefits of the scheme have been extended to 52 transgender employees. The Ministry of Labour and Employment said that around 48% of workers are up to the age of 25 years in newly enrolled workers. The ministry said that data reveals that more jobs have been generated for the youth. And now let's take a look at the oil prices. Well, oil prices fell by approximately $1 today ahead of the US Federal Reserve's interest rate decision, with investors uncertain when peak rates will be hit and how much of an impact it will have on energy demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $93.61 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $90.22 per barrel when reports last came in. So, what would you say to that, Avinash? Oil prices are falling by $1 today. We know that Russia and Saudi Arabia have cut production of oil. How is that going to impact in the coming days? Well, as I mentioned earlier also, that crude prices are unlikely to come down significantly in the short term. There is a supply crunch in the market, and I think China, increasing its demand for crude, Indian demand also growing. I would not be surprised that initially the crude prices will stay elevated, and I think that is definitely going to be a little matter of concern, not only for the Indian economy but all companies which are dependent in crude and crude derivative kind of raw material. So I think it's going to be a little volatile in the near term. I would suggest $93 to $95 a barrel is very much possible, and I think unless it doesn't come down below $89 to $88 a barrel, I think for us it's going to be a little expensive affair, and obviously that is going to cut into the margins of all the companies which are dependent on crude derivative kind of products. जी अविनाश जी, और गोल्ड और सिल्वर पर नजर डालते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के मूल्य में 129 रुपए की गिरावट हुई। सोना 59,153 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 90 रुपए टूटकर 72,479 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। वैश्विक बाजार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,953 और 50 सेंट प्रति ऑंस पर था। चांदी $23.56 प्रति ऑंस पर बढ़त के साथ कारोबार कर रही थी। अविनाश जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. BSE Sensex slumps nearly 800 points. NSE Nifty falls below 19,900. Rupee hovering near a record low, closed 20 paise lower at 83 rupees and 7 paise against the US dollar. And oil prices fell by approximately $1 ahead of the US Federal Reserve's interest rate decision. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra, friends. I'm Lalema Aneja Dang and my co-anchor Nikhil Shukla signing off.
नमस्कार। नमस्कार। Market Mantra.